Good morning, friends. This is CA Vittal Chinde. I am explaining concepts of budget. ये बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है, असेसमेंट ईयर 2026-27। सबसे पहले सैलरीड और अदर्स के टैब स्लैब देखते हैं। टोटल इनकम टैक्स रेट अप टू 12 लाख नील, 4 लाख 1 से 8 लाख 5%, 8 लाख 1 से 12 लाख 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख 25% और 24 लाख के ऊपर 30%। फॉर दोज हैविंग सैलरी इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 75,000. Hence, no tax for salaried persons up to 12,75,000, including pension scheme. पेंशन स्कीम अगर किसी ने ली है ATCCD की तो 50,000 तक वो होता है, वो मिल के 13,25,000 तक जाता है। मतलब जिसने अगर सैलरीड में से सैलरीड पर्सन है और जिसने पेंशन स्कीम नहीं ली है तो उसको 12,74,999 को नील टैक्स लगेगा। 12,75,000 को भी नील टैक्स लगेगा, लेकिन 12,75,001 इतना है उसका टैक्स, तो उसको 4 लाख से शुरू से काउंटिंग हो जाएगा, 5%, 10% ऐसा। जो सैलरीड नहीं है तो बिजनेस है वो, तो उनको 12 लाख में 11,99,000 को मतलब 12 लाख को भी नील टैक्स लगेगा। 12,01 उसका इनकम है तो वो पहले 4 लाख से काउंटिंग चालू हो जाएगा, 5%, 10%। तो उसके बाद जो है अपडेटेड रिटर्न्स कैन बी फाइल्ड इन 4 ईयर्स। पहले ये अपडेटेड रिटर्न 2 साल के में भर सकते थे हम। नेक्स्ट, नाउ टैक्स पेयर कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। टैक्स पेयर नीडिंग करेक्शंस, अपडेटेड रिटर्न किसको भरना होता है, क्यों जिनको करेक्शंस कुछ करने हैं तो उनको वो अपडेटेड रिटर्न भरने होते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीज़न के लिए बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट एट्सेट्रा एग्जाम्पशन लिमिट ये बढ़कर 1 लाख तक हो चुका है। जिनको रेंट का इनकम मिलता है तो इनको 2,40,000 तक विदाउट TDS रेंट का इनकम मिलता था। अगर उनको रेंट अगर 2,46,000 है तो उनको TDS से कट करके बैलेंस आ जाता था। तो अभी नए स्कीम में 6 आफ्टर इन न्यू स्कीम those are receiving up to 6 lakh rent can receive rent without any TDS deduction. Then custom and import duties adjustments, duty reductions. Number 1, leather export duty removed, it was 20%. Then lab grown diamond imports duty exemption continue. Handicraft export period extended up to 1 year. Earlier it was 6 months. Duty increases. Textile imported duty on fabrics 20% or rupees 115 per kg. Electronics flat panel displays 10% to 20%. Luxury goods higher duty on watches, electronics and baggage items. Key highlight for individuals. Number 1, claiming two self-occupied properties. Taxpayer now allowed to claim benefits for 2 properties without additional conditions. Automatic retrieval. Tax notices and attachments can now be retrieved seamlessly.
AI suggestions, actionable steps, templates for replies provided. Tracking tools, stay on top of due dates with reminders and submission status tracking. GST changes before budget. Mm, no pre-deposit for filing appeal in case of show cause notice of penalty demand. पहले पेनल्टी डिमांड के लिए प्री डिपॉजिट कंडीशन नहीं थी. अभी आफ्टर बजट proper 10% deposit of the penalty is a precondition for filing an appeal. In all cases involving only the imposition of penalty without involving demand of tax is applicable to tribunal cases also. Transfer pricing. Transfer pricing के new changes क्या क्या है? The assessee shall have option to apply the ALP. ALP means arm's length price determined for a particular financial year to similar transactions for the next 2 consecutive years by filing an application in prescribed form, prescribed matter and in prescribed time. The IPO, the TPO means transfer pricing officer, shall within 1 month from the end of month in which option is exercised issue an order validating the application subject to prescribed condition. Upon validation of option by TPO, the ALP determined for a particular financial year shall automatically apply to similar international or specified domestic transactions for the next 2 financial years. The TPO shall examine and determine the ALP for similar transactions for consecutive financial year in a consecutive manner. Then, based on the TPO's order, the AO shall recompute the assessee's total income for those years. No separate reference for ALPs. Computation for in these cases shall be made. Then if a reference has already been made before or after TPO's declaration, it shall be determined as non-existent. Above provisions shall not apply to proceedings under Chapter Roman 14b relating to block assessments. CBDT with prior approval of central government may issue guidelines in case there is any difficulty in applying the provisions. That's all for this first part. Remaining next part, second part of the budget जिसमें फर्म्स कंपनीज का सब डिटेल होगा. तो बजट का पार्ट नंबर 2 एपिसोड will be given in next week. Okay, thank you.